हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं जून 2020 के PYQs रिलेटेड टू ब्रिटिश पोएट्री। सो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपकी जो प्रेपरेशंस हैं, आपकी जो नॉलेज है वो कहीं पीछे ना छूट जाए। सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। नंबर 1। सो जून 2020 का पहला क्वेश्चन जो ब्रिटिश पोएट्री से रिलेटेड है, दैट हु अमंग द फॉलोइंग रोट मजेपा। मजेपा करके एक पोएम है, किसने लिखी है? अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन। 17th सेंचुरी के एक मिलिट्री लीडर हैं जो यूक्रेन के, उनसे रिलेटेड मजेपा किसने लिखी है? और हमारे ऑप्शंस हैं विलियम कूपर, लॉर्ड बायरन, पीबी शेले और एस.टी. कोलरिज। वेल, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन हैज रिटन मजेपा. It is written in 1819. Byron's Mazeppa is a long narrative poem inspired by Ukrainian legend, and it is modeled on the Swedish King Charles XII. Is defeated at Poltava. He retreats with his men और फिर वो वापस चले जाते हैं। और मजेपा जो कि उनका एक एलाई है, रिकाउंट्स हिज ओन यूथफुल ऑर्डियल, और वो अपने ही जो यूथ से रिलेटेड जो है वो घटनाएं हैं, स्टोरीज हैं, वो इसमें बताता है। दैट इज व्हाट मजेपा इज ऑल अबाउट। एज अ पनिशमेंट फॉर फॉरबिडन लव अफेयर, मजेपा को एक लव अफेयर के लिए उसको पनिश किया जाता है। व्हाट इज डन कि एक घोड़े के ऊपर मजेपा को बांध दिया जाता है। मजेपा इज टाइड नेकेड टू वाइल्ड हॉर्स एंड सेट लूज। बिल्कुल नेकेड करके उसको घोड़े की पीठ पे बांध दिया जाता है, एंड ही इज लेट लूज, को छोड़ दिया जाता है। और जो हॉर्स है उसको लेके इधर उधर यहाँ वहां सब जगह घूमता है, फॉरेस्ट में, रिवर्स में, प्लेन्स में, until Mazeppa nearly dead was rescued by Cossacks. Cossacks ने मजेपा को रेस्क्यू किया था। तो इसमें से बहुत सारे डिटेल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मजेपा को किस लिए पनिश किया था, उसको क्या पनिशमेंट मिली थी, किसने उसको रेस्क्यू किया था, हॉर्स कहाँ कहाँ घूमा था, मजेपा जो का चार्ल्स 12th का एलाई था कि एनिमी था। इस तरह के सारे डिटेल्स क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इवन द थीम। And this is what are the opening lines. It was after dread Poltava's day when fortune left the royal Swede. Around a slaughtered army lay, no more to combat and to bleed. Yeah? Okay. Moving on with the next question. Which of the following poems by Philip Larkin? Philip Larkin is so important. You cannot afford to miss out on him. उसकी कोई ना कोई पोएम जो है, चाहे वो एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर एज अ कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में आती ही है। मतलब यू कैन नॉट, कुछ राइटर्स तो है ना जो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते, चाहे वो रोमांटिक्स हैं और चाहे वो मॉडर्निस्ट लाइक फिलिप लार्किन है। ऑल दीज यू कैन नॉट मिस। टी एस एलियट, ब्राउनिंग, इनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। Deals with the trauma of a rape victim who says, even so distant, I taste the grief. What is the name of the poem? Deceptions, Faith Healing, Sad Steps, or Wild Oats? The answer is Deceptions. Okay, this is the correct answer, Deceptions. It is written in 1950. Deceptions is one of Larkin's early poem. उसकी early poetry का हिस्सा है, और कौन सी collection के अंदर आता है? The Less Deceived in 1955. लिखी 1950 में गई थी, लेकिन वो पब्लिश हुई थी The Less Deceived के साथ in 1955. It deals with the trauma of a young woman who was raped while unconscious, reflecting on her grief and helplessness. Even so distance I trace the grief. This is the opening lines, and it shows the trauma that still lingers within her. And it opens with a quotation from Henry Mayhew's London Labour and the London Poor. ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हेनरी की उसकी जो ओपनिंग है किसकी कोटेशंस में से है। इट इज फ्रॉम द कोटेशंस ऑफ London Labour and the London Poor, written by Henry Mayhew, and this is what it is. The quotation is all about. You can read it. Of course, I was drugged and so heavily I did not regain consciousness until the next morning. I was horrified to discover that I had been ruined, and for some days I was inconsolable and cried like a child to be killed or sent back to my aunt. It is a real testimony, woman's testimony after being drugged and raped. So these are the opening lines. और उसके बाद फिर he starts writing his own poem. Even so distance I can taste the grief. और ये सब उसकी lines. It is very painful and a very sad poem.
दो स्टेंजास में डिवाइडेड है. फर्स्ट स्टेंजा के हैं 9 लाइंस और सेकंड के हैं 8 लाइंस. राइम स्कीम भी इरेगुलर है. ये फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है और ये सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम है, वो इरेगुलर और इस तरह से इसलिए रखी गई है बिकॉज इट इज जस्टिफाइंग द थीम ऑफ द पोएम. Moving on with the next question. Okay, so again, the favorite kind of question of net, where you have a list of the author and the list of the work and you've matched them out. Now here we have all the romantics mostly. Blake was a transitional phase, more like John Keats, William Wordsworth, P.B. Shelley, William Blake. Alistair, Songs of Experience, Comic and the Excursion. Now हम सबको पता है कि विलियम ब्लेक ने लिखा है द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. मीन्स डी का 2 है. अब डी 2 तीन ऑप्शन में है, तो एक हमारा ऑप्शन जो है वो नलीफाई हो गया. उसके बाद comes the work The Excursion. Excursion is written by William Wordsworth. We know all that. This is all very famous work. So B is 4. B4 इसमें है और B4 इसमें है. तो ये वाला ऑप्शन हमारा नलीफाई हो गया. तो हमारे पास रह गए दो ऑप्शन, B और C. तो अगर हमारे पास ये है और उसके बाद अगर हमने शेली को डिटेल में पढ़ा है, we know that Shelley has written Alistair. C1 जो है इसी ऑप्शंस में है. That means Keats has written the comic. The comic जो है by Keats is one of his lesser known works. So famous authors, famous works तो करने ही है, famous authors lesser known works भी करने हैं. Yeah. So option B is the correct one. John Keats has written comic. William Wordsworth has written The Excursion. P.B. Shelley wrote The Alistair. And William Blake wrote Songs of Experience. And these are the opening lines and the themes of the work. You can take a screenshot, pause the video, take a screenshot, revise it as much time you want, many times you want, because these are important things. और इसमें से they may ask you questions. Moving on with the next question, that in which of the two poems in the following list are examples of dramatic monologue. Dramatic monologue हमें पता है कि दो जो authors हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा dramatic monologue के बारे में या उसको बहुत ही famous करा है, एक तो है Browning, for no doubt, and then Browning के साथ it is Alfred Tennyson. राइट. सो इसमें इन चारों ऑप्शंस में से एल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस, ये तो पक्का ड्रामेटिक में उन लोग हैं. फिलिप लार्किन चर्च गोइंग, कैरल एंड डफी मेड्यूसा, कैथरीन फिलिप्स अ मैरिड स्टेट. सो ये मोर रीसेंट और मोर कंटेम्प्रेरी ऑथर्स की तरह हैं जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में लिखा है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कैरल एंड डफी एंड एल्फ्रेड टेनिसन. I've already told you कि फिलिप लार्किन को आप नहीं मिस आउट कर सकते और साथ ही कैरल एंड डफी एक मतलब मैंने जो पैटर्न देखा है ऑल्टरनेटली रिपीट हो जाता है. कैरल एंड डफी एक पेपर में आया, एक में नहीं आया, फिर नेक्स्ट में आया, एक में आया, एक में नहीं आया, फिर नेक्स्ट में आया. तो इस तरह से वो उसको ऑल्टरनेटली रखते हैं. तो कैरल एंड डफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, the correct option is A and C, right? And Lord Alfred Tennyson and Carol and Duffy's Medusa. यूलिसिस तो बहुत बहुत फेमस है, हमने सबने पढ़ी होती है ग्रेजुएशन में. तो डेफिनेटली मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज डू प्रिस्क्राइब यूलिसिस, एंड जिसमें द speaker is very who is Odysseus. Speaker is Odysseus. His name is Ulysses also, and he's reflecting his restlessness on returning to home. Means he has spent his life on sea and अब वो घर वापस आ गया है, लेकिन अब वो उसकी जो सोल है ना वो और कुछ और चाहती है. उसको लगता है कि जो घर पे आके वो आराम से बैठा है, that is wasting his time. So he is becoming, very panicky, and he wants to go to the sea again. एंड फिलिप लार्किन द चर्च गोइंग, ये सारी पोएम्स के ओपनिंग लाइंस दिए हुए हैं राइट इन ऑर्डर जिसमें वो आए थे. कैरल एंड डफी मेड्यूसा, द वर्ल्ड्स वाइफ. This is the opening line. A suspicion, a doubt, a jealousy grew in my mind. So this is Medusa is a mythical figure, if you know. She's a woman with a head and has snakes as her hair. उसके बालों की जगह snakes हैं बहुत सारे, like hundreds and thousands of snakes on her head. And अगर आप उसकी तरफ देखते हो into her eyes, then you turn into stone. That is the power of Medusa. Then Catherine Phillips has written A Married State. These are the opening lines. आप इसको पॉज करके पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी उतनी मेहनत बच जाएगी. Okay, moving on with the next set of question.
Which one of the following is a set of metaphysical poets? Metaphysical poets बहुत important, और इनमें से कौन सा तीन चार नाम, हर थ्री नेम्स हर जगह पे दिए हैं, तीनों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में तीन नेम दिए हैं और आपको जज करना है कौन. अब ड्राइडन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, तो ये हमारा, इसमें भी ड्राइडन है, ये भी नहीं है. एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में लिखा है, लेकिन ही हिमसेल्फ इज नॉट मेटाफिजिकल पोएट्स. तो वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन, जॉन डन, हेनरी वॉन एंड एंड्रयू मार्वल. Yes. So metaphysical poets, we all know a group of 17th century English poets like Herbert, Donne, Vaughan, and Marvell and Croshaw, known for use of conceits, blend of emotion and intellect, and love, imagery, wit. This is all combined. One interesting thing about John Donne that I would like to share, कि John Donne जो है, बिफोर टी.एस. एलियट ही वाज रिगार्डेड एज अ वेरी बैड पोएट, कि उसको लिखना नहीं आता, उसको कुछ समझ में नहीं आता, ही यूजेस वेरी डिस्टेंट इमेजरी जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता. लेकिन व्हेन टी.एस. एलियट wrote about the metaphysical poets in his essay, from that time Donne became very important. The whole perception changed around John Donne. Okay, so this is one interesting fact about John Donne. It was T.S. Eliot who brought more fame to John Donne. Okay, these are बाकी options में, जैसे Dryden, Pope, Johnson, Eliot, Great. So these are critics or the later poets who have commented on the metaphysicals, and they have revived the interest in metaphysical poets, but they are not themselves metaphysical poets. Okay, moving on. Which book of Paradise Lost incorporates the speech rhythms of Adam and Eve's marital quarrel? मैरिटल क्वारल कौन सी बुक में आता है? एक चीज याद रखो, मिल्टन को भी नहीं छोड़ के जाना है. मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में से हमेशा क्वेश्चन आता है, और चौसर, या तो चौसर आएगा या मिल्टन आएगा या दोनों आएंगे. तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बुक 9. Book 9 of Paradise Lost is turning point of Milton's epic. It narrates the fall of man. After Satan tempts Eve, she eats the forbidden fruit, then persuades Adam to share in her transgression. After eating, Adam and Eve's relationship shifts dramatically. Their speech rhythm changes, moving from harmony and elevated blank words to discordant, quarrelsome tones. वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और their whole tone changes, like they डिस्कॉर्डेंट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से डिसएग्री करना शुरू कर देते हैं, क्वारल करना शुरू कर देते हैं. Milton deliberately alters the rhythm and tone of their dialogue to reflect the loss of innocence and emergence of blame, guilt, and marital strife. All these happens in book 9. Or this is the opening line. No more of talk where God or angel guest, with man as with his friend familiar. Asked. Okay, these are the opening lines. Moving on. एंड दीज आर द डिटेल्स. जो बाकी की जो ऑप्शन थी उसमें बुक 4, बुक 6 और बुक 7 जो इंपॉर्टेंट हैं. बुक 4 में क्या होता है, फोकसेस ऑन देयर आइडल लाइफ बिफोर द फॉल. देन 6 में होती है वॉर इन हेवन, माइकल और सेटन की आर्मीज. 7 में क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज नरेटेड बाय रफेल. तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सी बुक में हुआ था, या जो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ था वो बुक 7 में हुआ था, किसने नरेट किया था. तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं. एंड देन बुक 9 इज अबाउट फॉल, टेम्पटेशन, मैरिटल क्वारल, स्पीच रिदम, रिफ्लेक्ट्स डिस्कॉर्ड. तो मिल्टन वाज सो पावरफुल पोएट दैट जैसे ही उनका फॉल ऑफ इनोसेंस होता है, उसका जो टोन ऑफ राइटिंग है और जो रिदम है वो सब चेंज हो जाता है. तो इट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following poems are by Robert Browning? पहले एल्फ्रेड टेनिसन आया, अब रॉबर्ट ब्राउनिंग. आई टोल्ड यू कैन नॉट मिस आउट सम पोएट्स. जो आप लिस्ट बना सकते हैं, इनको मिस कर ही नहीं सकते. नन ऑफ देयर वर्क इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो अनइम्पॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, या लेस पॉपुलर वर्क है. इज इट लॉक्सले हॉल, पाइट पाइपर ऑफ हेमिलिन, द लेडी ऑफ शैलेट, और टू इन द कैंपेन? So we have all these options combined together. एक चीज याद रखो, लेडी ऑफ शैलेट किसकी फेमस पोएम है? इट इज बाय टेनिसन. तो सी ऑप्शंस नहीं है, राइट. सी वाला डिडक्ट हो गया. और द पाइड पाइपर ऑफ हेमिलियन ब्राउनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पोएम भी है. इफ यू हैव हर्ड अबाउट, एक ये कहानी के फॉर्म में भी आपको सुनाई गई होगी, मे बी शायद आपने बचपन में सुनी होगी, या फिर आपने ग्रेजुएशन में देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं, दैट अ लॉट ऑफ रैट्स वर देयर एंड अ पाइड पाइपर, वो बजाने वाला, एक बांसुरी बजाने वाला, उसको बुलाया था, एंड ही चेज्ड द रैट्स आउट ऑफ द सिटी.
बट फिर क्या होता है कि वो द विलेजर्स और जो किंग होता है उसको, मतलब ऐसे हल्की सी एक स्टोरी मुझे याद है दैट दे डू नॉट पे हिम, तो वो फिर फ्लूट बजा के वापस सारे रैट्स को सिटी में छोड़ देता है. दिस इज ऑल द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलन. एंड सो बी इज फॉर श्योर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. सो द आंसर इज बी एंड डी, क्योंकि इसमें तो ए है, तो हमारा आंसर बी और डी. So the 2 poems by Robert Browning is Pied Piper of Hamelin and Two in the Campagna. Locksley Hall is by Tennyson. These are the opening lines. And Pied Piper of Hamelin is by Browning and it's written in 1842. Opening lines are these, and these are the themes. The Lady of Shalott and Two in Campagna again. And this is our next question. Who is the author of A Fragment, written in 1819? It is one of the earliest vampire stories in English. Okay, so ये question थोड़ा I think गलती से इस PPT में ऐड कर दिया गया है. We are doing British poetry, but since ये question आ गया है तो let's do it. Is it by P.B. Shelley, Lord Byron, Bram Stoker, or Mary Shelley? Well, the correct answer for this question is Lord Byron. He has written A Fragment in 1819. It is incomplete. ये उसका incomplete work है. Historically significant है because ये one of the earliest vampire stories है in English. And the story, इसका other names है A Fragment or The Burial of Fragment. And the major main character of this story is Augustus Darwell, and it is written in epistolary form. Epistolary form, if you remember, it is written in the form of letters. जो है जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं और उसी के थ्रू जो है वो स्टोरी जो है वो डेवलप होती है. The letter is dated on 17 June 1816. And the major characters are these. The narrator recounts the story in a letter. Augustus Darwell, wealthy elderly man, and Suleiman, a Turkish janizary. Right. And one interesting fact about this work that John William Polidori based his novella The Vampire in 1819, originally attributed in print to Lord Byron, on the Byron fragment. Byron ने जो वर्क लिखा था The Fragment, उसके ऊपर based एक novella The Vampire, also in 1819, is written by John William Polidori and it is actually attributed to Byron. The vampire in this story is Lord Ruthven and it is modeled on Byron himself. That is quite interesting. And the story was the result of the meeting of the Byron had in summer of 1816 with Persis Bysshe Shelley, where a ghost writing contest was proposed. So 1816 में एक ghost writing competition हुआ था जहाँ पे बायरन, शेली और पॉलीडोरी, जिसने वो द वैम्पायर वाली स्टोरी लिखी है और नॉवेला लिखा है, they were all there together. And the opening lines of Byron's A Fragment are these. It was a beautiful evening and the sun was just setting behind the mountains of Morea and gliding the waves of the sea that washed their base. Moving on with our next question. In which of the bog poems are very important by Seamus Heaney. Seamus Heaney, again, very crucial writer. Speak about the perishable treasure of a body, murdered, forgotten, nameless, terrible. So the kind of words that are used: murdered, forgotten, nameless, terrible, perishable treasure. So is it from the bog queen, grobel man, punishment, or strange fruit? The answer is strange fruit. The phrase perishable treasure. So the phrase perishable treasure and the description murdered, forgotten, nameless, terrible appear in Seamus Heaney's poem Strange Fruit from his 1975 collection A North. उसकी collection का नाम है North. उसकी ये poem है. And it was inspired by preserved corpses exhumed from the Aras boglands in Denmark. ठीक है, जो डेड बॉडीज हैं, कॉप्सेस हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है कि फर्दर उनके ऊपर कुछ नो वो हो सके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ये सब. तो आरहस बॉगलैंड्स में जो ऐसे प्रिजर्व कॉर्प्सेस हैं डेनमार्क में, उसके ऊपर बेस्ड है. Opening lines are these. Here is the girl's head like an exhumed god, oval faced, prune skinned, prune stones for teeth. Heaney's bog poems are influenced by anthropological work of P.V. Glob, the bog people. उसका ये work था. This can be quite important कि हीनी के जो
both poems and they were quite important. पर किसके वजह से या किससे इंस्पायर होके ही ने ये बॉग पोएम्स लिखनी शुरू, इट वाज पी.वी. ग्लॉब और उसका वर्क था द बॉग पीपल, जिसमें क्या था, द डॉक्यूमेंटेड बॉडीज प्रिजर्व्ड इन पीट बॉग्स, के बॉग्स में वो बॉडीज को प्रिजर्व करके कैसे रखा था जाता था, वो उसके बारे में था. सो दिस इज दीज आर द मेटाफर्स, वायलेंस, सेक्रीफाइस. नॉर्दर्न आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा था उसके रिलेटेड ये पोएम्स हैं. Moving on with the next question. Okay, the rest of the Bog poems, again, unki themes or opening lines are there. Bog Queen was, all these poems were from his collection North, published in 1975. And these are the opening lines for Bog Queen, Grobel Man, Punishment. The next question we have, the list is the lines and then list two is poems. You have to match the lines with the poems. Monuments of unaging intellect in the foul rag and bone shop of the heart, so mastered by the brute blood of the air, as weary hearted as that hollow man. So हमारे options हैं Leda and Swan, Adam's Curse, Sailing to Byzantium, and the Circus Animals' Desertion. If you know, these are all the poems by W.B. Yeats. Yeats, again, very important writer. Leda and the Swan, Adam's Curse, Circus Animals' Desertion, Sailing to Byzantium are all very important works by Yeats. And the correct answer is option C. A. Monuments of Unaging Intellect is from Sailing to Byzantium. These are the opening lines. Then the foul rag and bone shop of the heart is from the circus animal's desertion. Opening line, I sought a theme and sought it for it in vain. And then, so mastered by the brute blood of the air is from the Leda and Swan. And the opening lines, a sudden blow, the great wings beating still. Then, as weary hearted as that hollow moon is from Adam's Curse, and these are the opening lines, theme, and the summary. So please go through them in detail. एक बारी, दो बारी, तीन बारी, जितना भी चाहो उसको एक बार read करो and go through them. That can really help you out. Moving on with the next question. This question is related to the work, very famous poem to his coy mistress by Andrew Marvell, Metaphysical Poets का again question. So, which two rivers are mentioned by Andrew Marvell at the beginning of his poem to his coy mistress? The Ganges, Thames, Humber और the Jhelum. तो इनमें से कौन सी दो पोएम्स हैं जिसका जिक्र जो है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल कंसीट से भरी हुई एक पोएम है रिटन बाय एंड्रयू मार्वल. इसमें से कौन सी दो रिवर्स का उनमें नाम आता है? द करेक्ट आंसर इज गंगा एंड हम्बर. द गैंजेस एंड हम्बर. एंड दीज आर द लाइन जिनमें वो जिक्र है. द दाउ बाय द इंडियन गैंजेस साइड शुड रूबीज फाइंड, आई राइड बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड complain. इंडियन गैंजेस, हम्बर. सिंबलाइज इंडियन गैंजेस सिंबलाइज एक्सोटिक डिस्टेंस एंड रिचनेस, क्योंकि यहाँ पे रूबीज की बात हो रही है. और हम्बर जो है मार्वल की खुद की लोकल रिवर है और उसमें उसने पर्सनल ज्योग्राफी के बारे में बात करी है. वो कहना क्या चाहता है कि अगर इंडियन गैंजेस के आसपास रूबीज हैं और इट इज वेरी एक्सोटिक, देन हम्बर जो है वो कंप्लेंट करेगी अगर वो उसके बारे में प्रेस करे तो. So these are the opening lines of the poem. Had we but world enough and time, this coyness lady were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. Thou by Indian Ganges side shouldst rubies find. ठीक है, तुम जो इंडियन गैंजेस के साइड पे होगे और वहां पे कुछ एग्जॉटिक रूबीज ढूंढ रही होगी. आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं यहाँ पे हम्बर वाली साइड पे खड़े होके कंप्लेन करूंगा कि हाँ तुम इतनी दूर हो मेरे से एंड ऑल. तो कहता है वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, हमारी जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट है एंड उसके लिए हमको उसका easy और फटाफट से उसका यूज करना चाहिए. rather we should not waste our time in idle pursuits and we should be engaged in more meaningful things. So this is all about for today's video. These are related to June 2020. Soon I'll be back with 4 more PYQs, but उससे till then आप इसको रिवाइज करते रहिए, अपने नेट के पेपर को प्रिपेयर करते रहिए. पोइट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप लिमिटेड नंबर ऑफ ऑथर्स को प्रिपेयर करके मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो. सो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू आप कर सकते हो, राइट. सो एक लिस्ट बना के जो आप देख रहे हो
बार बार पोएट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, वही 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 पोएट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनको तो आप बिल्कुल मतलब छोड़ो ही मत. So I'll be back with another video very soon. Till then, please subscribe to the channel. Keep on learning, keep on hustling. Do not give up and hit the bell icon and share with your friends जो नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनको आप चाहते हो कि आपके साथ वो भी क्लियर कर जाए नेट का एग्जाम. तो प्लीज शेयर दिस वीडियो. ओके, सी यू. बाय बाय.